अंकित, संचित, हाँ आज आनी चाहिए यार, बिल्कुल आनी चाहिए. We have VRC, VLR mentor. Yeah, she's from I'm Ahmedabad. Yes, 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 yes. So here we are with the third session of this cohort, and I hope all of you have gone through this percentages already. So here we'll be doing profit, loss, and discount. All right. So mark your presence, everyone. Who all are present? I can see. क्या करूं मैं, बताओ अब मैं. किसी भी टाइम क्लास करो, लोग आते ही नहीं है. रिस्पॉन्स 6 को आएगा. ओके. यार मैंने क्या कहा था, सैटरडे तक आ जाना चाहिए. आई टोल्ड यू राइट. सो दैट इज फ्रॉम माय ओन जजमेंट एंड एक्सपीरियंस. तो जो अभी कह रहा है, क्या पता सही, मैंने फॉलो नहीं किया न्यूज़ को, बट आई थिंक दैट्स राइट. कौन सा टाइम करूंगी, सब लोग आ सके. इस तरह तो मज़ा ही नहीं आएगा ना. अब लोग अगर आएंगे नहीं क्लास देखने तो क्या मज़ा है. चलो एनीवेज, इससे बेटर तो पब्लिक ही कर देता चैनल इसको, है ना. चलो लेट्स स्टार्ट. व्हाटएवर इट इज. वेरी गुड इवनिंग एवरीवन. चलो, ऑल ऑफ यू गॉन थ्रू द प्रीवियस सेशन परसेंटेजेस. Okay. So first thing first, the fundamentals of profit and loss. The certain things which all of you already know. CP is the cost price. This is the bedrock of all calculations. When I say bedrock, that is basically the fundamental. I'm using some fancy terms over here. The bedrock of all calculations, profit loss percent is always calculated on CP unless specified. That is very important. Unless specified. Okay. कुछ क्वेश्चन तुम देखे होंगे जहां बोले कि उसने गलती से, एक आदमी ने सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट निकाल लिया, तो उसका असली प्रॉफिट क्या रहा होगा. So that is why, unless specified, it's always CP, cost price. Then we have selling price, the realized value. The selling price always calculated on the cost price. So on the cost price, you can have a profit or you can have loss, right? So here it is profit by 100. It can also be 1 minus L by 100, all right? And we discussed that earlier as well, the percentage changes and all those stuff. So in percentage change, when we discuss that if A final will be A initial multiplied by 1 plus minus X by 100. So here A initial is the cost price, A final is the selling price, and plus X is profit, minus X is loss. Okay. Now, the golden rule, if SP is doubled and profit triples, use algebra to equate the conditions to finding the base percentage. Algebra is not going to leave you. Okay. By now you must have realized already. Is it my love for algebra or is it the reality? You need to decide. Okay. Now, then comes the first question. We'll directly do the questions because we have done everything that is required for the technicalities in the percentage session. So for every question, you'll be getting how many? 1.5 minutes. Okay. So इसके लिए तो एक ही दूंगा कि ऑलरेडी तुम लोग क्वेश्चन देख चुके हो. वन कर देते हैं 1.5 मिनट्स. ओके, वी स्टार्ट नाउ. I want you to do 5 quick questions before we jump onto the solutions.
I'm not giving you the options. Time up. Here comes the next one. Good evening, Gaurav. All these questions, as you see the tag, they are tagged as fundamentals. Okay. So this way, even if you have forgotten something, you will be able to grasp it quickly based on what we have done in the previous class. Next. Arithra will do everything. The next one.
All right, so let's start the questions one by one. Okay, so the base was the previous class, that is percentages, and these are the fundamental questions which will help you regain that lost confidence. Okay, Anish, not next. Now we'll be doing the 5 questions. Okay, after that, the next ones come. So, first is dealer makes a profit of 20% when selling an article. The moment you read it, just need to write clearly S is equal to 1.2C. Okay, S represents selling price, C represents cost price. If he had bought it for 10% less, that means 0.9C, and sold for $18 less, that is S minus 18, he would have gained 30%. That's all. Is that cool? So in the first expression, I can put the value of S in terms of C in the second expression, which makes it 1.2C minus 18 is equal to 1.17C, which gives you 0.03C is equal to 18. And now I hope all of you know how to divide things quickly, right? C will be 600. Clear? Next. A sells an item to B at 20% profit. So let the cost price of A be A, B be B, and so on. तो B का जो cost price होगा, that'll be 1.2 times the cost price of A. Cool, cool, right? Right? B sells it to C at a profit of 25%. Nice. What next? C sells it to D at a loss of 10%. with loss calculator को clearly mention भी कर दिया है मैंने, है ना, कि कोई दिक्कत ना हो किसी को. 0.9 times C. If D paid 1080, so what was A's cost price? Now, so this guy D can be written as, now I can write as 0.9, and then I substitute this 1.25B in place of C. 1.25B, I would really be stupid if I write B again. Without even wasting any single moment, I'll replace this B with 1.2A. Okay, that's how it goes. And D is 1080. Now we can calculate quickly. 0.9 into 1.25 into 1.2. By the way, you could also have used the ratios, which will be a quick calculation way. So if I write it that way, 1080, 9.9 is 9 by 10, 9 comes here, 10 goes up. 1.25 is 5 by 4, 5 comes here, 4 goes up. 1.2 is 6 by 5, 6 comes here, 5 goes up. Wow, so 5 and 5 got cancelled out. What else? 6 ones are 6, 6 eights are 48, 6 zeros are 0. Anything else? Not really. So 1800, 7200 by 9 is what we get as the final answer. ठीक है? 9 into 20. So 800 is your final answer. Cool. Next. A person sells, huh, all of you got it? A person sells 2 articles for rupees 5,000 each. On the first article, he gains 25%, second, he loses 20%. ठीक है, तो ओवरऑल प्रॉफिट लॉस परसेंटेज क्या इसका होगा? Up to two decimal places. So 5,000, he gains 25%. 5,000 का 25% is how much? 1,250. That's what he gains. Second, he loses 20%. That means he has lost 1,000 rupees. Overall, he gained to 250 rupees. Is that clear? 250 rupees he gained on how much? On how much? On 10,000. ओ तो सही है? नहीं, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे वो एक कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन नहीं है, मतलब ये कंफ्यूजन लोगों में होता है जब कभी आप ये ध्यान नहीं देते. मैंने थोड़ी पहले बोला भी था कि अनलेस स्पेसिफाइड यू विल नेवर, you'd always assume cost price, but it's selling price. उसने सेल किया है 5,000 पे. ऑल राइट, सेल किया है 5,000 पे, तो एक पे 25 मिला, एक पे 20 चला गया. So basically, if I want to calculate the total cost price, it will be 5,000 upon 1.25 plus 5,000 upon 0.8. That will be total selling cost price, and selling price is 10,000. Is that clear? That is one way. We can also use the successive percentage change. This becomes 4,000. This becomes how much?
4/5 कितना चलेगा ये? 25,000, 6, 2, 5, 0. That comes out to be 10,250. Is that right? Okay, cool. कैलकुलेशन सही है मेरा? तो इसने 250 रुपीज लॉस कर दिए हैं 10250 कॉस्ट प्राइस पे इंटू 100. यू कैन कैलकुलेट इट really quick. 25 ones are 25, 25 40 ones are 1/41 into 100. That'll be how much? रिस्पॉन्स शीट आ गई है? ओके, कितना जाएगा? कुछ भी आएगा, ये 2 पॉइंट समथिंग है ना? 2.5 से हल्का सा कम, 2.43 आ रहा है. ओके, दैट इज द आंसर. नेक्स्ट. Oh, success is the sum of all small efforts repeated day in and day out. Robert Collier. Those who will get success. Ram buys 2 watches for rupees $1,000 each. He sells one at 50% profit, other at 10% less than the first one selling price. Okay, so देखो, पहला वॉच जो है 1000 multiplied by 1 plus p by 100. That is the selling price for the first watch, S1. And for the second one, S2, then he is selling at 10% less than the first one's selling price. 10% इसका अगर मैं करूं S1 का 0.9 S1, I'll get 900, right? Times 1 plus p by 100, that's what I'm getting. ठीक है, इतना मिल गया. तो ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 15%. So S1 plus S2, if I add these two guys, I'll get 1900, 1 plus p by 100. And overall profit he has made is 15%. Clear? Find the value of p. तो ये जो वैल्यू है, ये कॉस्ट प्राइस की, टोटल कॉस्ट प्राइस की, जो कि 2000 था, 2 वॉचेस थे, 2000 मल्टीप्लाइड बाय 1.15 is the value of 1900 times 1 plus p100. By the way, I'm doing a lot of calculations quickly, a lot of steps, intermediate steps. I'm doing it, in my mind. Are you guys comfortable with that speed, or do you want me to show you each and every calculation that I did? Tell me. 23 is what I get, right? 23 by 19 minus 1 is p by 100. So 4 by 19 is the answer. 4 by 19 in terms of um, percentage will be the answer. कितना आएगा? 20 से ऊपर आएगा, 21 के आसपास जो भी आएगा, 21 something. All right, 21 point something is the answer. Is it okay? That's great. Because we have to do a lot of things in quick time. Next one. Just should I slow it down? Okay, in the next question, I'll slow it down. 2/3 of the articles are sold at a 25% profit. 20% of remaining articles are sold at 10% loss. Rest are sold at the cost price. What is the overall profit percentage? See, now I want to tell you something. Just Kirat and everybody who is not comfortable with the speed. See, the thing is, here, now you need to understand one thing. There are two kinds of things given in a question. One is absolute value, other is relative value. When I say, this is very important, absolute value is dollars, rupees, all that stuff, where we actually quantify things. Relative is ratios and percentages. So in this question, if you see, they have not given any absolute value, they have given only relative value, right? Is that right? Just Kirat and anybody else? यहाँ पूछ रहा है overall profit percentage. Now when the absolute value is not given, relative value is given, and relative thing is asked. Relative thing is asked. We can assume any value for absolute. This is something which is very, 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 very important. Exactly. That's what I was trying to tell everyone. Is that clear, everyone? तो यहाँ पे क्या है कि 2/3 और रिमेनिंग 20% ऑफ रिमेनिंग आर्टिकल्स. 2/3 अगर बोल रहा है तो मुझे 3 का एक मल्टीपल चाहिए. सो लेट मी अज्यूम दैट overall articles cost rupees 300. Is that clear? Just Kirat, tell me yes or no. I'll just repeat. Whenever you have an absolute value, relative value, and you need to find the relative value, everything is relative, so you can assume anything to be absolute. This is something, the fundamental maths, which a lot of people get confused in, that where can you assume, where you can't.
Here, whenever the absolute value is given, you can't assume it, right? Okay, in that case, you'll be assuming something like 100 times x if absolute is given. Anyways, going back to the question. So two-third, that means 200 rupee. 200 rupees तक सामान को 25% profit पे बेचा गया है. Okay. Remaining is how much? 100. इस 100 का 20% मतलब 20 rupees के सामान को बेचा गया है 10% लॉस पे, right? 10% loss pay. So I can just do one thing. I can just multiply this by 0.9. Clear? Rest are sold at cost price. So how many are remaining? 200 गए 25% की प्रॉफिट पे, मतलब इनको 200 का 25% इज हाउ मच? 50. 250 में बेचा गया इसको, इसको बेचा गया 180 में, राइट? एंड व्हाट इज रिमेनिंग? 200 gone here, 100 gone here, 20 gone here, 80 are remaining. These 80 are sold at the cost price, which is 80 only. So overall profit percentage 250 plus 180. All right, that is becomes 430 plus 80 is 510. 510 रुपीज सामान बेचा गया है और खरीदा कितना? 300 में खरीदा था. ओके, सो द प्रॉफिट हियर इज 210 rupees on 300 rupees. So overall the profit percentage you can calculate that, right? Is that clear, guys? All of you? ये मैं क्या कर रहा हूँ? मैं मुझ पे कुछ हो गया है, पता है? मेरा दिमाग हो गया है थोड़ा सा खराब. मेरे को लग रहा है कि तुम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, मैं टेंशन में आ गया हूँ. क्या मैं कर रहा हूँ यार? क्यों ऐसा कर रहा हूँ मैं जिंदगी में? So 250 plus 80 is 330 plus 18 is 348 minus 300 you get 48. So overall 48 rupees का profit है on 300. That comes out to be 16%. All right. Now 5 questions are over. Let us talk, guys. Let us talk. What exactly happened? How many of you have seen your response sheets? Anybody? Hey, anyone saw the response sheet? Do you guys want to look at it for 5 minutes and then we'll resume, or should I resume and watch it afterwards? You see that response it afterwards. What do you want? Yes, about what? यस क्या बोल रहे हो? एग्जैक्टली बताओ ना, इसमें यस किस बात के लिए बोल रहे हो? समझ नहीं आ रहा. गिव सम टाइम. 10 minutes. मूड खराब होगा. अब जो होना था हो गया ना यार. देखो, मूड खराब उन चीजों पे होना चाहिए जो आपने प्लान ही नहीं किया था. अब तो प्लान के अकॉर्डिंग ही किया था. क्या ठीक है, 10 मिनट जल्दी देख लो फटाफट. ओके, एंड देन टेल मी ऑल्सो. आई एम हियर वेटिंग हियर ओनली. अरे थ्रो, बट दे ऑल्सो गिव यू द करेक्ट आंसर्स. नो, दे गिव यू द करेक्ट आंसर्स ओवर देयर. ठीक है, मैं ऐसे बैठ के यहाँ बात कर रहा हूँ, तुम लोग देखते रहो तब तक, है ना? जल्दी से देख लो. गलत टाइम पे निकालते हैं कैट वाले, मतलब यहाँ क्लास चल रही है, बीच में निकाल दिया. लेट्स डू वन थिंग, गाइस. 10 मिनट में हो नहीं पाएगा तो क्लास कर लेते हैं. मैं क्लास थोड़ी जल्दी खत्म कर दूंगा, है ना? कि बिकॉज पीपल विल वॉच द रिकॉर्डिंग, उनका मूड ज़्यादा खराब होगा. बिकॉज दे हैव प्लान फॉर द क्लास एंड नाउ दे 10 मिनट बीच में बैड ट्रिप हो जाएगी. सो लेट्स कंटिन्यू द क्लास ओनली. हियर वी गो. ऑल राइट, इज दैट कूल? इज दैट क्लियर? ओके, चलो शुरू करते हैं फिर.
क्या हुआ? क्लास में हो ना अभी? चलो ठीक है, मेरे को जरा वो चाहिए, आंसर की चाहिए यार। हाँ, क्योंकि मेरे को वो करना है, मेरे को इसको डालना होगा ना वेबसाइट पे। क्या हुआ, कितना हुआ? चलो ठीक है, कर लो, आराम से कर लो। आफ्टर। All right, so we had four questions for this. Then we'll go on to questions of mark price, so that between the fundamentals of mark price. And then we'll go on to some difficult level sets. Is that clear? So let's start with this one. An article is sold at 30% profit. Okay. So that means S is equal to 1.3 times C. If its CP is increased by 20%, that means new CP is 1.2 C, and SP is increased by 10%, that means 1.1 S. The new profit percentage is P. So this 1.1 S minus 1.2 C is the new profit, and new profit percentage is P. Is that clear, everyone? So I want to ask you something. Do all of you do it this way? Like, are you comfortable in framing the equations correctly? Now we'll just put in the value of S in terms of C. And as you see, C will be getting cancelled out. So S is 1.3 C. We put it here, 1.1 multiplied by 1.3 C minus 1.2 C whole upon 1.2 C is basically P by 100. You see here that C and C will be cancelled, right? 1.43 minus 1.2 times C upon 1.2 times C, they got cancelled out, is P upon 100. You can calculate that it this way, right? So what do I get? 0.23 upon 1.2 into 100 is the value of P. Clear? So what do I get here? Just are you comfortable now with this? Slightly less than 20% is what we get. Okay. Next. A dealer sold an item to a consumer at 20% profit. So S is 1.2 C. Consumer sold it to a final customer at $10 less than what she bought it for. So okay, here we need to pay attention that this C is for the dealer. All right. And now the cost price for the consumer is S. So he's selling it at 1.2 C minus 10. That is the selling price for the consumer. Okay. And by doing this, she incurred a loss of 5% on her purchase price. Okay. So 0.95 times 1.2 C. Now, you know what? This is a kind of question which can be done mentally also. कैसे? देखो,
समझना बात को, मैं क्या बोलूंगा। नाउ कम्स द टेक्निक। अभी मैंने सिंपली बताया 5% अगर उसके लिए, लेट्स फॉरगेट अबाउट डीलर फॉर अ while, let's talk about consumer sold at $10 less and she incurred loss of 5% on her purchase price. So 5% is equivalent to $10, right? Which means 100%. What is 5%? 1 by 20. So 100% will be $200. So she would have bought it for $200. Is that clear? Now it means this 1.2, see this guy is 200. So do you understand that? Is that clear? So what is the answer here? What should be the answer? डीलर का ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, तो क्या मुझे यहाँ पे इसको 1.2 सी इक्वल सी निकालना है या एस निकालना है? आई डू कैलकुलेट एस. So this question can be confusing for people, but the answer is actually 200 only, nothing else. But if they ask for consumer, then we would have calculated the value of C. This is for the consumer, right? And this is for the dealer. Oh नहीं, ये सही है क्या? एस निकालना है कि सी निकालना है? S is selling price, C is cost price for the dealer. Where are you guys? Are you there? कुछ सुन ही नहीं रहा. सी ही निकालना है. हाँ चलो, सुन तो रहे हो ना? ठीक है, अरित्रो ही सुन रहा है बस एक. मुझे वही उम्मीद थी. Where are others? I think everybody is lost in CAT का score. 1000 by 6, what do you need to calculate? So answer is, yeah, 166.66. Anyways, let's go to the next one. A manufacturer sells an article to a distributor at 15% profit. So let's write manufacturer from manufacturer point of view. If I assume the cost price to be C, then the selling price is 1.15 C. At this price, who buys? The retailer buys. Now coming to retailer. Listening? Chalo. Retailer. So manufacturer to distributor. तो ये हो गया. अब करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर क्या कर रहा है. डिस्ट्रीब्यूटर इज डूइंग समथिंग. He's selling to retailer. That three people involved, right? So the distributor here, whose cost was, for whom the cost was 1.15 C. ठीक है, तो कोई बात नहीं, रहे इतना मत सोचो यार. तो 1.15 सी में उसने खरीदा था. किसने? डिस्ट्रीब्यूटर ने. और इसने क्या किया? रिटेलर को बेच दिया 20% प्रॉफिट पे. 20% प्रॉफिट पे. दैट इज 1.2. सो नाउ कमिंग टू रिटेलर. ओके, स्टेप बाय स्टेप वी आर डूइंग इट. रिटेलर ने profit percentage is 25% if the customer buys it for 1000. So 1.15 C into 1.2 is what retailer bought it at, and then 25% profit is 1.25. This will be equal to 1000. So C will be equal to 1000 upon all of it. Just calculate and tell me the answer. All right, whatever you get. Coming to next one. Do not worry about your difficulties in mathematics. I can assure you, it's great. ये हमने पहले भी कहा था. आगे बढ़ते हैं. A trader has, मेरे को ये पूछने मन भी नहीं कर रहा कि तुम लोग का कितने क्वेश्चन सही हुए हैं इसमें. A trader has 100 kg of sugar. He sells a part of it at 10% profit, rest at 25% profit, gains 16% on the whole. What quantity sell at 25% profit? Now, let's say he sold X. इसमें काम करते हैं. Again, we have to talk about we have given in terms of percentage. तो मैं काम करता हूँ, मान लेता हूँ कि ऐसा मान लेता हूँ कि 1 किलोग्राम जो शुगर था वो 1 रुपए का था. इसका मतलब ये हुआ कि पूरा सामान X रुपए का हो गया. पूरा सामान 100 रुपीज का हो गया. तो X किलोग्राम at 1 rupee each, and other part is 100 minus X kilogram. Okay,
So this part he's selling at 10% profit. This he is selling at 25% profit. He gains 16% overall. We can use allegation also in this way, right? In this case. But because I have not taught you allegation yet, 1.1x plus 100 minus x into 1.25, this is equal to 100 multiplied by 1.16. इतना प्रॉफिट ओवरऑल हुआ था, यहाँ पे 10% हुआ है, यहाँ पे 25% हुआ है. So you can calculate this and get the answer. By the way, if you do it by allegation, it will be pretty simple. 10 पे बेचा एक को, 25 बेचा दूसरे को, 16 is the mean price. Here you get 6, here you get 9. 9 is to 6, so 3 is to 2. That is the ratio. 3:2 के रेशियो में बेचा गया 100 किलोग्राम को. 100 को ब्रेक करो 3:2 के रेशियो में, तो 60 किलोग्राम उसने बेच दिया है 10% पे, और 40 किलोग्राम बेच दिया है 25% पे. आंसर इज 40. इज दैट क्लियर? चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं. So discount, markup and schemes. Markup is the lift from CP to MP. So mark price is always cost price multiplied by 1 plus markup percentage. All right, that is the mark price. I'll write it MP, CP. Discount drop from MP to SP. So basically discount is mark price minus the selling price. And discount is never calculated on CP. It's calculated on MP. So this is the value of discount percentage. Is that clear? Successive discounts, I told you already. Okay. जो भी डिस्काउंट होगा वो माइनस हो जाएगा, उसे नेगेटिव कर देंगे. ठीक है ना? All of you understand that? ये क्लियर हो गया हमारा, ठीक है? So let's do the questions. Here, the thing is, we have done a lot of percentages and technicalities already. This is just the application of percentages. All right, let's start. Here we go.
Okay, I'll check again. After 17 questions, we have advanced ones. Alright, so what happened?
Among the fundamentals, this is the last question, and then we'll start with the advanced version. All right. I'll see her through. When I explain, I'll see. गौरव डोंट हैव टू से दैट मेरा मन नहीं हो रहा है, मैं थक गया हूँ इन सब पढ़ाई से, मैं लाइफ में एवरेज रह जाता हूँ. यार ये नहीं होना चाहिए, है ना? So you started the promise in that, right? That is what you're gonna do. ऐसे मत सोचो. तुम लोग को मोटिवेट करना पड़ेगा क्या? मुझे लग रहा है इस क्लास को बीच में बंद करना पड़ेगा. लॉट ऑफ पीपल आर मैसेजिंग मी कि सर मेरे को 1 घंटा लगेगा ठीक होने में, मैं क्लास की मैं रिकॉर्डिंग देखूंगा. लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग दैट. But some people have their MyGAT exam day after tomorrow. They'll watch the recording. It's okay. If something happened that you did not expect, if that is the case, then it's okay to feel disheartened. But then also, you can't control things. There's still decision making, right? And now what to decide? हाँ करना है ना. Very good. See, profit is the applause you get for taking care of your customers. ये Ken Blanchard ने कहा था. इसके आगे डिस्काउंट एंड मार्कअप यहाँ से थोड़ा से एडवांस वर्जन कहाँ से है? यहाँ से एडवांस क्वेश्चन आ जाएंगे. हाँ 19 से 18th भी कर लो. देन आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग. अरे तो that's right. See, the whole India is all the CAT aspirants. And now I'm in that zone that they will look at the response sheet, get depressed, discouraged, broken, bent. But you know what? The warriors do not get bent and broken. They just, kind of rest for a while and start again. All right. So this is over. Let us discuss all the questions. All right. Where are we? Yes. Here we are. From which question we have to do? This is question number 10.
क्या बोल रहे हो रित्रो? One doubt, since I did not get a proper response anywhere in the internet, how is Excel right for someone with SDE profile? Uh, See, it's not great for SDE, obviously. I think you know that already. So it's good for HR के लिए तो है ही, obviously. Then for product management, it is good. Project management, organizational development, consulting also it's good, and general management. SDE के लिए, have you applied for IIT? IIT Delhi. That's a good one. But still, general management role is there in Excel Drive, and it is great. Okay. कैट वालों को ना रिस्पॉन्स शीट अभी निकालनी नहीं चाहिए, सीधा रिजल्ट निकालना चाहिए था आइडियली। ऐसे ही खेलते हैं ये लोग, पता है। एक बार देखा मैंने एक्सेल राइज जैट के एग्जाम के एक दिन पहले रिजल्ट निकाल दिया इन लोगों ने। पहले रिस्पॉन्स शीट निकाली, लोग परेशान हुए। फिर किसी तरह मोटिवेट किया। मैं ये बात 6 साल पहले की है। आई मोटिवेट देम एंड देन दे आर बैक ऑन ट्रैक इन 2 days। और जैट के एक दिन पहले उन्होंने निकाल दिया रिजल्ट। मैंने बोला देख मत लेना रिजल्ट को, भूल के भी, लेकिन इंसान रुकता नहीं, देखता ही है। चलो, लेट्स सॉल्व दिस। क्वेश्चन नंबर 10। A retailer marks up an article by 60%. He offers a discount such that the profit made is 20%. ठीक है। So the mark price, if I assume it to be M, it is 1.6 times C. He offers discount such that the profit made is 20%. All right. Yeah, true. That's kind of obvious. M is 1.6 C, and then coming to profit made is 20%. Okay. So the selling price is basically equal to how much? 1.2 C. And discount offer. So mark price minus selling price is actually the discount, which is 720 in this case. So if I subtract it, 1.6 C minus 1.2 C is 720. I'll get the cost price directly, right? That is 720 upon 0.4, which gives you how much? 1800 as the final answer. Okay? 1800. I hope you all of you got that. This is the answer. Nah. Prathamesh. A shopkeeper offers two successive discounts, D1% and D2%, on an article. Single equivalent discount is 36%. ठीक है. So what does it mean? That means minus D1 minus D2 plus D1 D2 whole upon 100. It is not diagonal, है ना? Rhombus मत समझ लेना इसको. I'm trying to crack a joke, guys. Smile. Okay? Don't think much. This is how much? 36%. 36 by 100, right? Now, some people be confused that upon 100 कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना। तुम्हें याद होगा इस फॉर्मूले में बाहर परसेंटेज लगा, परसेंटेज पर 100, और that is why we can do it। कर सकते हैं यहाँ पे, यहाँ नहीं लगा सकते। Understood? This is always already in percentage format. This is the something which a lot of people get confused in. Okay, now markup percentage is 50%. Given that D1 plus D2 is 45, that is already known to us. So we just put the value. Okay, profit percentage made by the shopkeeper. This will be minus 45. So D1, D2 upon 100 will be 81. Yes or no? Right? So, what do we get? ये तो मिल गया, ठीक है। इसके क्या कर सकते हैं हम? We also know that D1 plus D2 is 45. We know that. We can also apply algebra here, taking the square and the square root and all that stuff we can do, isn't it? That is a possibility. Rest all, what all is given. Markup percentage is 50%. Markup is 50%. इस 50% पे डिस्काउंट देने के बाद ये हमारे पास आया है। ठीक है, तो यहाँ पे द आइडियल वे इज जस्ट वी नीड टू फाइंड आउट D1 plus D1 D2 individual value. So D1 plus D2 whole square
minus 2 times d1 d2 is actually equal to d1 plus d2, right? I can calculate that, isn't it? So I will get d1 plus d2 whole square is 2025 minus 45 is equal to 2 times d1 d2, isn't it? All of you got this? So d1 d2 बन गया 1980 upon 2. 990 is what we get. है ना? तो यहाँ पे क्यों हो रहा है ऐसा? इसी क्वेश्चन की बात कर रहे थे तुम लोग. Is this the question that you were talking about? Tell me. Be quick. But as well, problem है ना? The data is inconsistent in that case. See, like we can do it by this also, but with this data becomes inconsistent. नहीं ठीक तो है, मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ? नहीं नहीं नहीं, ये ठीक है. This will be d1 square plus d2 square. You know what? In your this thing, what do I say? Response even I am getting totally. मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम लोग फील कैसे कर रहे हो. Anyways, ठीक है, इसे कर लेते हैं. Okay, that's all right. हाँ 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 हाँ, ठीक है. Not to worry. कुछ करना ही नहीं है इसके अंदर ना. That's not inconsistent. That's basically it's all right. Okay, we don't have to do anything here. This is 36, this is 50. That's all. Nothing has to be done. So m is equal to 1.5 c and discount. This is m. Okay, and m minus s selling price. This is s. This is actually equal to the discount. That is 36%. ठीक है, ठीक है. So I'll write discount as 36 m by 100. That is the discount. Okay. ठीक है, कर लेते हैं. हाँ. So 1.5 c, if you multiply it by 36 by 100, you will get the exact selling price. Okay, is that clear? This will be selling price. हमें निकालना नहीं रहता, बिल्कुल सही बात है. कितना मिल जाएगा हमें? S is equal to C times, if I multiply these two, 15 3s are 45, 15 6s are 90. 54 is what I get. 54 by 100, that is the value of selling price. Profit percentage कितना होगा? S minus C upon C into 100. That is really simplified. So बात ही खत्म हो गई है. यहाँ प्रॉफिट तो आ ही नहीं रहा. तुम लोग यही बोल रहे थे ना कि प्रॉफिट नहीं आ रहा. हम्म. ये रुको, पूरा फिर से करते हैं. And I am looking at this spawn sheet. ठीक है. Mark price is 1.5 times C. Selling price is 100 minus 36 upon 100.
times M. Okay, yeah, now this is fine. So selling price is 0.64 multiplied by 1.5 C, which gives us 0.96 C. So here there is a loss, not a profit. ये तभी प्रॉफिट होता है जब ये 1 से ऊपर होता है ना, ये 0.96 है, तब 96% of cost price selling price, the loss is 4%. That is, so that if this is the question, the answer is minus 4%. All right, that is the answer. Is that clear? ठीक है, -4%. हाँ, -4%. That's it. Next, a 50% markup is given to an article. Okay, so M is equal to 1.5 times C. Discount is offered of 20%. So selling price is 0.8 times M, which gives us 0.8 into 1.5 times C, which is 1.2 times C, that is selling price. Okay. Profit is 100%, $100. So S by C is 1.2, that is 6 by 5, right? 1.2 6 by 5, 20% is 1 by 5. तो ये बोल रहा है कि प्रॉफिट $100 का है, ठीक है ना? इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे रेशियो बढ़ा है 5 से 6, एक बढ़ा है, और रियलिटी में बढ़ा $100. दैट मीन्स 1 unit of ratio is equivalent to $100 in the real world. So what is 5? Cost price is 500. कि 5 units into 100 is 500. Selling price is 6 into 100, it is $600. बोल रहा है कि अगर यहाँ पे if two successive discounts of this are offered instead, what is the profit or loss amount? ठीक है, two discount of 10%, that is equivalent to -10 plus 100 upon 100, right? That is what we will get. Is how much? -90. -90, तो 19% कम हो जाएगा. 19% of 600 इतना कम हो जाएगा, 19%. इज दैट क्लियर? तो कर लेते हैं. हाउ मच इज 19% ऑफ दिस? 19 6 9 54, 114 $114 का डिस्काउंट अगर दे दिया तो न्यू सेलिंग प्राइस है 600 minus 114. That gives you $486. So there is a loss. 500 का सामान था, 486 में बेचा गया है, तो लॉस ऑफ $14 is there. Is that clear? All of you, watch this out. I'm coming. All right, I'm back. Everyone, is this clear? ठीक है, आगे बढ़ते हैं. 13th. Exactly, that's the spirit. Gaurav and Haritro. Vendor offers a buy four and get two free scheme. Additionally, he provides a 10% discount. All right, 10% discount on the final bill amount. ठीक है. What percentage must he mark up the price to ensure an overall profit of 30%? ठीक है, अगर buy four get two है, इनमें क्या होता है? देखो यहाँ पे एक माइक्रो कॉन्सेप्ट है. माइक्रो कॉन्सेप्ट समझने के लिए सबसे आसान तरीका क्या होता है कि तुम्हें यहाँ पे अगर ₹4 का सामान तुमने खरीदा तो तुम्हें ₹6 सामान मिल गया. इजंट इट?
हम्म या फिर वेंडर के हिसाब से उसने 6 रुपए के सामान को 4 में बेच दिया, ये भी कह सकते हैं। इज दैट राइट? तो इसका मतलब क्या है कि जो अगर बाई 4 गेट 2 है, तो ऑब्वियसली ही इज मेकिंग सम काइंड ऑफ लॉस. व्हाट विल बी द लॉस? ही इज गेटिंग ओनली 4 and giving away 6. What is the loss? 2 रुपए का लॉस है 4 पे, मतलब the loss is of 50%. Can I say that? Loss, or you can also call it a discount. Let's call it discount, not loss. There's a discount, बिना बोले, unset discount of 50% is there, right? D1. And then he provides 10% more, so D2 is 10%. So overall, the discount will be minus 50, minus 10, plus 50 into 10, whole upon 100. This gives you how much? Minus 60 plus 5 is minus 55%. So overall 55% discount आ गया है. But he wants a profit of 30%. तो इसको मार्कअप कितना करना चाहिए? Hmm. Is that clear? Even after giving a 55% discount, he wants a profit of 30%. तो मैंने एक चीज तुम्हें बहुत मतलब एक क्लास में सिखाया था. Mark price upon cost price is equal to how much? They tell you that 100 plus P or minus loss, whatever there is, upon 100 minus D. ये बात याद है? इससे हमें डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा. This is a micro hack here. Again, a micro hack, right? So let's put in the values and get the answer. He wants a profit of how much? 30%. That's really good. 30% profit अगर चाहिए उसको, तो क्या करेगा? 100 plus 30 upon 100 minus 55. This is how you will get the ratio of mark price and cost price. That is how you calculate the markup percentage. So M by C is equal to 130 upon 45. 5 2s are 10, 6 are 30, 9s are 45. बहुत खतरनाक टाइप का इसको करना पड़ेगा मार्कअप, है ना, बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा. So M minus C upon C into 100 is what you need to calculate the markup percentage, isn't it? So 26 minus 9 upon 9 into 100, 17 by 9, 200% से भी ज्यादा मार्कअप है, बट हल्का सा कम है, 190 के आसपास. ऑलराइट, 189 पॉइंट समथिंग आएगा. इज दैट क्लियर? ये बिल्कुल वैसा लग रहा है जैसा कि कुछ नहीं होती मार्केट्स जहाँ पे सामान 1000 रुपए का होता है, 100 में खरीदा जाता है, समथिंग लाइक दैट, है ना, वहीं का कुछ बनता लग रहा है ये. नेक्स्ट, रेशियो ऑफ CP to MP is 3:5. So M by C is given as 5/3. शॉपकीपर ऑफर डिस्काउंट ऑफ 20%, प्रॉफिट इज 20%. मैंने तुम्हें एक बहुत मस्त चीज सिखा दी है. तो M by C इज इक्वल टू व्हाट? 100 प्लस 20 यहाँ पे हो जाएगा upon 100 minus D. See, this is how your life will be simplified. This is 5/3. Let's calculate the answer, get the answer. Let's calculate the answer here, है ना? बात समझ में आ रही है? कितना मस्त नहीं हो गया देखने में ये? So if you solve it, 120 into 3 upon 5 is actually equal to 100 minus D. So 524s are 72 is what you get. So D is 28. D is 28. What percentage of mark price is the discount amount? D is 28 is what we have achieved. Can we calculate the mark price also? बस हो गया ना calculate. The answer is 28%. That's it. This is in percentage only, right? All of you got it? So this micro hack is very, very, very helpful. है ना? There are 9 people who are watching. I don't know who all are there. कौन कौन लगाओ ना, attendance लगाओ एक बार. D is 28. An article MP is $200, 1200. Discount of 20% is given. Profit of 28% is made. Discount was increased 30%. By what percentage will profit reduce? ठीक है, हम फिर से वही कर लेंगे. We can calculate the value of C. M by C is 100 plus 28. See, this is a great
hack to solve questions. So 1200 into 80 upon 128 is the value of cost price. Now it says if discount was increased to 30%, what would the profit, by what percent would the profit reduce? 30% discount, मतलब इसका 30% is equal to 360. Discount 360 होगा तो selling price कितना हो जाएगा? 1200 minus 360, right? That is $740. Okay, so now you can calculate it really well. Samriddhi, Gaurav, Prathamesh, Avi, Arithro, Ankit. Okay, is that clear now to all of you? 16 fives are 80, 16 eights are this, 8 into 15, 150. So cost price is 750, guys, and selling price is 740. प्रॉफिट इसका तो लॉस ही हो गया सीधा सीधा, isn't it? इस बंदे का लॉस हो चुका है। 740 पे अगर बेचेगा ये 30% डिस्काउंट देके, तो इसका प्रॉफिट तो रिड्यूस हो जाएगा ना पूरा पूरा। तो पहले प्रॉफिट क्या था इसका? 28% प्रॉफिट था। अब इसका लॉस हो गया है कितना? $10 का लॉस हो गया है, isn't it? $10, $10 of 750 is how many percentage? How much percentage? If I calculate, if I want to calculate that, so this will be 25 threes are 25 fours are. This is कितना है ये? टेन इज व्हाट परसेंटेज? कितना हो जाएगा? कितना है ये? 13.33%। या राइट, ऑल राइट, यही होगा ना? यही होगा, ये सही है। ठीक है, तो इतना इसको लॉस हो गया, पहले इसको प्रॉफिट 28% था, ये बोल रहा है कितना परसेंटेज प्रॉफिट रिड्यूस हुआ है। द टॉकिंग प्रोबेबली अबाउट परसेंटेज पॉइंट्स। 28 से लेके -33.33 हो गया। सो दिस इज इक्वल टू हाउ मच? कितना कम हो गया? सो 28 माइनस 13.33, this gives you 28 plus 13, so 41.33% is the final answer. Is that clear, all of you? Yes or no? Be quick, tell me something. Yes, कुछ बोल नहीं रहा, आगे देखते हैं। An electronic store gives a 15% discount on a TV set. ठीक है, discount is 15%. So customer has a coupon for an extra, so D1 and D2 let be the coupon, 10% discount on the discounted price. अच्छा, discounted price, ठीक है, मतलब successive discount है। Store still makes 17% profit, so overall discount will be how much? -15 -10 plus 150 upon 100। अब तक तो ये देखो, इतनी बार हमने कर लेके भूलोगे नहीं कभी जिंदगी में। -25 plus 1.5 is -23.75%, that is the discount। इसके बाद भी 17% प्रॉफिट हो रहा है, तो एमपी और सीपी का रेशियो क्या है? मैंने हैक बताया है, M/C is 100 plus P. What is P? 17 upon 100 minus this 23.75 is what we can do. Clear? So 117 upon 73.75, ये कितना रेशियो है निकाल लो, that is the answer. ठीक है, अरे तो मैं क्या यहाँ गलत किया है? न्यू प्रॉफिट वॉज 12%, कहाँ लिखा है? वॉज इट 12? 13.33 नहीं है?
Can you check it once, all of you? Mark price 1200, discount 20%, profit 28%. So 100 plus 28 upon 100 minus 20 is M by C. So C is 1200 into 80 upon 128. So इसको मैं कैलकुलेट कर लूंगा, कितना मिल जाएगा मेरे को? अरे ध्रुव, क्या मैंने कुछ गलत चेक कैलकुलेट किया गया है? जस्ट चेक इट वंस. ठीक तो किया है यार, कॉस्ट प्राइस 750 हो गया. अभी बोल रहे हैं 30% डिस्काउंट देगा, 360 कम हो जाएगा. तो वन, ओके, गलत किया है मैंने और सब लोग इसमें आराम से बैठे हुए हैं. गलत मैंने ये किया है कि ये 840 है, ना कि 740. दिस इज 840. 840, देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 90 रुपीज. 90 rupees on 750. This goes away. 3 threes are 325 sir, 25 fours are 12% is the new profit. कितना प्रॉफिट रिड्यूस हुआ है? 28 से 12 हो गया, मतलब आंसर है 16%. ठीक है? All of you got that? This is 840, not 740. Let's go to the next one. Here we are. Retailer marked his goods X% above the CP. So M is 1 plus X by 100 upon C. He sold 1/3 of the goods at this mark price, 1/3 at 20% discount, rest at 40% discount. Overall profit is 20%. ठीक है ना? तो इसको हम बाद में देखते हैं, पहले एक काम करते हैं, थोड़ा इजी करने के लिए काम करते हैं. मान लो कि मार्क प्राइस जो था वो 100 था, ऐसा मान लेते हैं. ठीक है, एक पल को मान लेते हैं. ओके, सो 100 1/3 है या 1/3 है, 300 मान लेते हैं. लेट द मार्क प्राइस बी 300. ओके, आई जस्ट assumed and we will do other things afterwards. So let mark price be 300. If I do that, तो इसने 100 रुपीज़ का सामान, जो ये 1/3 है, इसको तो बेचा 100 रुपीज़ में ही. बाकी जो 1/3 है 100 का, उसको बेचा 20% डिस्काउंट में, मतलब 80 में बेच दिया होगा. जो बचा 1/3 है 100 का, उसको 40% डिस्काउंट में 60 में बेच दिया होगा. सो ओवरऑल 100 प्लस 80 प्लस 60, राइट? सो 240 में बेचा गया है. अगर 240 में बेचा गया है तब भी प्रॉफिट 20% का हो रहा है. इज दैट राइट? So this is the selling price. So what will be the cost price? 240 upon 1.2, which gives you how much? 200. Cost price 200. Let's put it here and get the answer. So मैंने assume किया था mark price 300. So 300 upon 200 is equal to 1 plus x by 100. Is that clear? So the answer is 50. The value of x is 50. Is that cool? Is that clear? All of you? समझ में आ गया है? Next, an item has a list price L. So marked price is L. Customer A gets successive discounts of 20 and 10%. So minus 20, minus 10, plus 200 upon 100 percentage, that is for customer A. This is how much? Minus 30 plus 2, 28% discount मिल गया है customer A को. Customer B को मिला है 30% discount. Okay, I'm putting minus because it's decreasing. डिफरेंस इन डिस्काउंट्स इज रुपीज डॉलर इज डॉलर 300. डिफरेंस कितना है इन दोनों के बीच में? 2% का. सो 2% इज इक्विवेलेंट टू हाउ मच? $300. दैट मीन्स 1% इज इक्वल टू $150. बताना क्या है? व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस इफ शॉपकीपर मेक्स इतना प्रॉफिट ऑन एस प्राइस? ओके, तो ये ए के हिसाब से किया हम लोगों ने ना. 1% इज 150. ठीक है, तो ए जो है, ए को सामान कितने मिला? यहाँ हमने जो पूरा कैलकुलेशन किया है दैट इज ऑन परसेंटेज. एंड परसेंटेज ऑफ व्हाट? ऑन व्हाट परसेंटेज? परसेंटेज ऑफ द मार्क प्राइस, इजंट इट? ये परसेंटेज ऑफ मार्क प्राइस है ना. बात समझ में आ रही है? कि डिस्काउंट, सी दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज वी आर डूइंग इट not by writing all the equations. 28% discount, 30% discount is on mark price, so this 1% is on mark price, so mark price will be
100% of this, that means 15,000 is the mark price. Clear? अब कॉस्ट प्राइस क्या होना चाहिए कि 25% का प्रॉफिट हो शॉपकीपर को ए के प्राइस पे. All right. So M by C, let C be the price of A, will be equal to 100 plus profit, that is 25, upon 100 minus discount, that is equal to how much? यहाँ से निकला 28, 100 minus 28. This is what we need to, this is where we can calculate things. MP is 15,000, let's put it here and get the answer. Is that clear, everyone? ये सवाल इतना सिंपल नहीं है, इतना सिंपल मैंने बना दिया है लिख लिख के ऐसा, और मेरे ख्याल से बात सबको समझ में आ चुकी होगी अब तक. So 15,000 into 72 upon 125 is equal to C by cross multiplication. Is that right? 25 fives are 25 600s are this. 120 is what we get here. 12 7 84 24 8 6 4 0. चेक कर लो मैंने सही कैलकुलेशन किया है कि नहीं किया. वैसे आमतौर पर मैं सही ही करता हूँ. सही किया है ना? That's all. That is the answer. 13,000 है तो मैंने गलत किया इसका मतलब. गौरव ने बिठा दिया, मतलब गौरव ने गलत किया है. ओके, सो ऑल ऑफ यू, हाउ मेनी, हाँ यहाँ तक हो गया. हाउ मेनी क्वेश्चंस वर एबल टू सॉल्व? We did 18 questions in 1.5 hours, and that thing, I think it's a good level of speed. 10 minutes got wasted in this cat ka score wala part. The response sheet, right? This is not a very simple question. So people who, how many of you think these questions were simple? अरे तो तुम मत बोलना. ऐसे सिंपल तो नहीं है ना ये, मतलब जैसे इसमें कुछ क्वेश्चंस, जैसे ये क्वेश्चन इज नॉट सिंपल. पीपल कैन, देयर आर डिफरेंट पॉइंट्स ऑन एट व्हिच पीपल कैन गेट कंफ्यूज्ड. बट नो व्हाट, द वे वी आर डूइंग इट, द वे वी, आई हैव सॉल्व्ड इट, this is the right way to solve, because this is how you save time and also not get confused. Is that clear? And now I can see people are dropping off somehow. How many are still present? Because यही ये तो खत्म हुआ है कि पूरा फंडामेंटल मॉडरेट खत्म. अब मैं जा रहा था एडवांस लेवल पे. सी, जहाँ पे we were doing that dishonest वाला part. Ten questions right, Ankit. चलो, good. Should we finish this off? Yeah, it's true. 16%. हाँ गौरव, अब थोड़ा सा एडवांस वर्जन है. चलो करते हैं. But I'm really, kind of disheartened by this response of students. I don't know what time suits them.
Next. Yeah, Ankit, I kind of understand that. Here comes the next one. This is something which you should, always remember. जो आज की तुम बता रहे थे, अंकित. Price is what you pay, value is what you get. Warren Buffett. You know what Warren Buffett? We'll discuss those things later on. Let's do this one. Okay, let's explain this. Let's solve this.
शॉपकीपर्स क्लेम टू सेल गुड्स एट अ लॉस ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं जो लोग गलत आमतौर पे करते हैं. He claims to sell, and I don't know why dishonest shopkeepers and all this stuff is so much heavily promoted. This is something which is very simple. I'll tell you how. You just need to behave like the shopkeeper, think like the shopkeeper. He claims to sell goods at a loss of 4% on the cost price. He uses a false weight of W grams instead of 1 kg. His own profit is 20%. What is the value of W? तो मैं यहाँ पे काम करूंगा, बताइए करूंगा. सबसे पहले एक काम करते हैं. यहाँ पे अगर अगर मान लेता हूँ कि ये 100 रुपए का सामान इसके पास था और ये बेच रहा है 120 रुपए में. दैट इज द एंड गोल. दिस इज द स्टेप वन, राइट? दिस इज द स्टेप टू. दैट इज व्हाट हैज हैपेंड. So in this journey, what all things have happened, that forms the entire narrative. Clear? Is that clear? So he claims to sell goods at loss of 4% on the cost price, but he uses a false weight of W grams instead of 1 kg. All right. इसका मतलब कुछ तो गेम खेल रहा है ये, कुछ तो गड़बड़ कर रहा है. ठीक है. ठीक है. तो ये 20 रुपीज जो है बता के ही ले रहा है, वो छुपा के ले रहा है. Isn't it? कैसे लेगा? तो इसका ये हुआ कि अगर वो क्लेम कर रहे हैं कि भाई मैं 4% लॉस पे बेच रहा हूँ, मतलब झूठ बोल रहा है वो. झूठ बोल रहा है. ठीक है. राइट. एंड ऑल्सो ऑल्सो 1 किलो का वो W ग्राम्स कर रहा है, तो इसमें इसका मतलब ये होता है, सबको समझना ध्यान से, कि अगर 100 रुपए का सामान, मान लो मैं 1 किलोग्राम का जो प्राइस है, दैट इज 100 रुपीज. दैट इज 100 रुपीज. ओके. ओवरऑल. ओवरऑल. राइट. What he is doing, he's claiming to sell it 4%. That means he's claiming to sell it rupees 96. That's what he's claiming, isn't it? Rupees 96. और इस 96 पे बेच रहा है, उस पे प्रॉफिट 20% का है. दैट मीन्स 96 अपॉन 1.2 इज 80. सो एक्चुअली ही इज गिविंग आउट द the price, whatever it is, goods. He's actually giving out goods of rupees 80 while he's charging rupees 100. Do you understand that? Charging rupees 96 actually, not 100. He's charging rupees 96. Is that clear? तो W का क्या मतलब है? W क्या है? तो बेसिकली वो 800 ग्राम सामान दे रहा है, बता रहा है 1000 किलोग्राम. मतलब जो W होगा दैट वुड बी 200 grams. Is that clear, everyone? W is 200. Is that cool? 200 ग्राम कम कर रहा है वो. ये कम पूछा है कि एग्जैक्टली W पूछा गया है, तो 800 ग्राम का होगा. 200 ग्राम उसने कम कर दिया है. ठीक है. Is that clear, all of you? So this is, see, what we did, we just made the story a narrative and we solved it, not even using mathematics. Clear? इसके पहले एक और क्वेश्चन था क्या? A grocer uses 15% less weight than the actual weight, sells the goods. इसका मतलब ये हुआ कि अगर 100 रुपए का सामान था तो वो एक्चुअली 85 का ही सामान दे रहा है, पर पूरा पैसा ले रहा है. अंकित समझा दूंगा फिर से. एंड सेल्स द गुड्स एट अ प्राइस दैट गिव्स अ प्रॉफिट ऑफ 5% ऑन द कॉस्ट प्राइस. मतलब वो 105 में बेच रहा है. इसको समझो. 100 रुपए का सामान था, दिया उसने सिर्फ 85 का, पर लिया 105 रुपए. तो ओवरऑल 30 रुपए ले लिया उसने प्रॉफिट. ठीक है. तो एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा? 30 on his actual cost, that is 85, and we calculate this. Is this clear? This is a very important concept, and that is why I'm paying a lot of attention to this, right? So 600 upon 17, you calculate that and you get the answer. ठीक है. Understood. प्रथमेश, गौरव. 23.52 क्यों बोल रहे थे हम लोग? चलो 20 वाला तुम्हें फिर समझना है. अंकित देखो क्या बोलना है. 100 रुपए का सामान मान लो,
20% प्रॉफिट है तो 120 में बेच रहा है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। पर ये क्लेम कर रहा है कि मैं 4% लॉस पे कर रहा हूँ, मतलब ये क्लेम कर रहा है कि मैं 96 रुपीज़ में कर रहा हूँ, 100 का 96 में कर रहा हूँ। और यहाँ पे इसका प्रॉफिट तब भी 20% है, तो 96 सेलिंग प्राइस हो गया। सेलिंग प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस टाइम्स 1.2, 20% था ये। तो 96 अपॉन 1.2 किया मैंने, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस आ गया, दैट इज 80। तो 100 रुपये सामान होना चाहिए, बेच देखो 80 का रहा है, मतलब ये 20 रुपये छुपा ले रहा है ना? तो 1 किलोग्राम इज 1000 ग्राम। So 100 rupees correspond to 1000 grams. That means, what does it mean? It means that this 80 corresponds to 800 grams. Simple, as simple as that. Clear? All of you got that? Is that clear? 23.52 आ रहा है, तो प्रॉब्लम क्या हुई है? कुछ मैंने कैलकुलेशन गलत कर दी है, जस्ट चेक इट वंस। मैंने यहाँ कोई गड़बड़ किया हुआ है, पता है गड़बड़ किया है मैं गड़बड़ किया है कि 83 + 30 नहीं, +20 होता है। ओके। 23.52 इज करेक्ट। चलो, बहुत अच्छी बात है। ये देखते हैं, 21 हमने कर लिया था क्या? हाँ। Merchant buys 100 kilogram of wheat. He mixes two varieties, 20 and 30, in the ratio 1:3. Sells at 35. 20 comes here, 30 go. Then data is inconsistent. ऐसा हो ही नहीं सकता. It is impossible. The mixture price will always lie between 20 and 30. Data inconsistent. Those who are watching the recording, you understand one thing. If you mix two things, so the mixture will always, if CM is the cost of mixture, CP is the cost of, uh, let's say, one quantity, and CQ is other quantity. Okay. Then, and if CP, one cost less than the second cost, CM will always lie between these two. So this is an inconsistent data question. ठीक है? Price is what you pay, value is what you get. Warren Buffett. Cost price of two varieties of rice is 50 and 60. They are mixed in a certain ratio and sold at 72. Selling price is 72. Profit is 20%. So cost price will be 72 upon 1.2. That comes out to be 60. What is the ratio of cheaper price to the costlier price in the market? ये भी inconsistent है, बीच में लाई करना चाहिए, नहीं कर रहा है. So it's like 0:2, है ना? Impossible. Inconsistent data था. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इसने चीपर प्राइस मिलाया ही नहीं, सिर्फ मैं चीपर वाला प्राइस मिलाया नहीं, सिर्फ महंगा वाला मिला दिया. ऑलराइट. SP है 72, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? 54.
क्यों? मैं सब करेक्शन गलत करने लगा आजकल। मैं सोच रहा यार हो क्या रहा है। हमारे देश में तो 12 × 6 = 72 होता है। गौरव तुम्हारे देश में ही होता होगा। ठीक है। चलो, that is all. Let's end this session here. We did 22 questions, and I think that was a nice thing, but what's not nice, अभी बात करते हैं इस बारे में। सेशन खत्म हो गया, and we'll talk about things which are, kind of hampering you guys. All right, take care all of you, और थोड़ा सा ज़्यादा लोग आने की कोशिश करो। मैं ग्रुप में बोलता हूँ, पता नहीं आज क्या हालत है लोगों की, आई जस्ट आस्क। ओके चलो, बाय बाय, टेक केयर। अभी बात मैं करता हूँ सब लोगों से एक एक करके। आज लग रहा है मैं, अगली क्लास पता नहीं हो पाएगी नहीं हो पाएगी, वैसे होनी चाहिए, लेट्स सी। बाय बाय।